A company was incorporated on 1st September 2017 to take over the business of a proprietor with respect to 1st April 2017. So he took the business from 1st April. So this is a starting date of commencement. Now it was been incorporated on 1st of September. Since it was been incorporated at the 1st of the September, तो हमारे पास कितने months हो गए for pre? April, May, June, July, and whole of the August. So 5 months is for the pre. Now, a company's profit and loss account for the year ended 31st March 2018 is given as follows. Now they have given us the profit and loss account for the year ended 31st March. तो इससे ये पता चल गया कि year end क्या है हमारा, 31st March is our year end. So if 5 months is for the pre, तो जो बचा, that is remaining 7 months will be for the post. So what is the time ratio over here? The time ratio is 5:7. Now they have given us the profit and loss account. The very first thing which is given is a gross profit. Now we all know that gross profit will be divided in which ratio? Sales ratio. Gross profit sales ratio में divide होगा. We have not yet calculated the sales ratio. We need to calculate it now. So gross profit sales ratio. Second one is salary. Now office salary. Office salary will go in the time ratio. नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ अ प्रोप्राइटर. देखो प्रोप्राइटर कब होता है? कंपनी फॉर्म होने से पहले. वंस द कंपनी इज फॉर्म देयर वी हैव अ मैनेजर्स, वी हैव अ डायरेक्टर्स. सो प्रोप्राइटर सैलरी विल बी डिवाइडेड इन द प्री इनकॉर्पोरेशन. बाय प्री? क्योंकि प्रोप्राइटर कंपनी फॉर्म होने से पहले था. सो इट विल गो इन द प्री. नेक्स्ट वन इज जनरल एक्सपेंसेस फिक्स्ड एंड वेरिएबल. नाउ हियर वी हैव वन एडजस्टमेंट. देखो फिक्स्ड का मतलब पूरे साल ये मुझे इतना तो देना ही है. होल ईयर आई हैव टू गिव. सो द एक्सपेंसेस विच वी इनकर फॉर द होल ईयर विल बी गोइंग इन द टाइम रेशियो. सो दिस 6,000 विल बी डिवाइडेड इन द टाइम रेशियो. और जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल मीन्स इट गेट्स चेंज. तो एक्सपेंसेस विच डिपेंड्स अपॉन द सेल्स. जितना सेल हुआ उसके ऊपर हमें उतना वेरिएबल का ये करना है. सो वेरिएबल पार्ट विल बी डिवाइडेड इन द सेल्स रेशियो. ठीक है, वेरिएबल पार्ट विल बी डिवाइडेड इन द सेल्स रेशियो. सो दिस विल बी डिवाइडेड इन द सेल्स रेशियो, दिस विल बी डिवाइडेड इन द टाइम रेशियो. दिस इज प्री. And this is even in the time. Now next one is traveling expenses. Now traveling expenses is given for the office staff. Office related expenses will be going in the time ratio. So this 12,000 we need to divide in the time ratio. Next one is salesman. अब salesman मतलब हम क्यों hire करते हैं उसको? sales के लिए, correct? So जो भी salesman का traveling expenses होगा that will be divided in the sales ratio. Okay, then it will be divided in the sales ratio. Now let's see what is the information which has been given for the sales. Sales during the whole year is 3 lakh. पूरे साल का 3 लाख है. Out of which 1,80,000 related to the post duration. तो अगर 1,80,000 is for the post, तो pre के लिए कितना हो जाएगा? 1,20,000. Wait. Okay. Pre के लिए फिर कितना हो जाएगा? 3 लाख minus 1,80,000, which will give you 1,20,000. So now find it out the ratio. 1,20,000 for the pre is to 1,80,000. So this will be equals to 2:3. Very good. 2:3 is the ratio, sales ratio. So time ratio यहाँ पर क्या मिला हमें? We got a time ratio of 5:7. We got a sales ratio of 2:3. You are required to prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2018, showing profit or a loss in the pre-incorporation and the post-incorporation period. हमें दोनों के लिए whether we are getting a profit or we are incurring loss, वो हमें दोनों बताना है. So कौन सा परफॉर्मा फॉलो करोगे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस वाला, which we have done today.